Hello, English language learners. Welcome to Learn English with Dr. DK. So I hope at this time you are able to hear me well. So if you are, and if you are watching my live stream right now, please let me know, because I started at your 6 o'clock, but my audio was not working. So I just started this again. So as I was mentioning in my previous video, that today is January 26th and it's a Republic Day in India. So many of you, if you are from India, you might have holiday today and you are celebrating Republic Day. So I am congratulating to all of you for this day. And today I had planned a quiz about sentences where we are going to learn all kind of sentences. But then I was like, okay, today let's do a reading about little bit about Indian history and discuss about it, talk about it. So by reading, you will be learning a lot of vocabularies, and of course, you will be learning the language also. So you will be able to use that language, right? So if you are here, then you can let me know that you can hear me well. And I am going to start the reading for little bit about Indian history. So let's do this reading and we will be discussing about it. So I am going to share the PowerPoint and I want you to be engaged, interact. Okay, so when I am reading, you will be reading with me, and then we will talk about this reading comprehension. Okay, so Indian Rebellion was a major Indian revolt against British rule in India. The rebellion, sometimes called the Sepoy Rebellion or Sepoy Mutiny, that began in 1857 and spread across northern and central India. So let's talk about this part, what we are talking about. So we are talking about what? We are talking about revolt. Revolt, who revolted? The Indian Rebellion. और वो कौन थे? सिपोए. सिपोए कौन थे? जो ब्रिटिश आर्मी में इंडियंस थे, जो जैसे अब आर्मी है इंडिया की या पाकिस्तान की या किसी और कंट्री की, उस टाइम पे जो इंडिया में आर्मी थी, दैट वाज अंडर हु? ब्रिटिश रूलर्स, राइट? सो उन्होंने क्या किया था? रिवोल्ट किया था. किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. सो इंडियन रिबेलियन, जो विद्रोही थे, कौन थे वो विद्रोही? वो जो थे वो सिपोय रिबेलियन भी उनको कहते हैं और सिपोय म्यूटनी भी कहते हैं, जो कि ब्रिटिशर्स के अंडर, ब्रिटिश आर्मी में इंडियंस थे. When did it begin? It began in 1857 and gradually it spreaded across northern India and central India, right? अब नॉर्दर्न इंडिया में कौन से पार्ट्स आ गए? जैसे पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, यूपी है, those parts, right? So thousands of people, mainly Indians, died in the fighting. So ज्यादातर जो मेनली कौन थे? इंडियंस थे. वो उसमें क्या हुआ उनको? They died.
in the fighting. At the time of the rebellion, a British trading company called the East India Company ruled most of India. So I hope if you are from India or even if you are from Pakistan, you know this history that there was a British trading company. They started trading. So the Britishers actually came to India for trading, right? जो ट्रेडिंग उनकी सबसे पहले थी, जो टी की ट्रेडिंग, इफ यू नो, चाय की ट्रेडिंग करते थे वो, इंडिया से चाय लेके वो अमेरिका में आके बहुत महंगी बेचते थे. अमेरिका में बहुत वो हिस्ट्री है ईस्ट इंडिया कंपनी की. So if you know about it, America was also under British rule. So, okay, so anyways, so the time of the rebellion, a British trading company called the East India Company ruled most of India. Most of India means pretty much all parts of India, right? In 1858, as a result of the rebellion. So rebellion, as a result of the rebellion, क्या हुआ? The British government took permanent control of the territory from the company. So first it was a East India Company, but then when Indian rebellion, they revolted. What they did? They revolted, right? They revolted against British rule. Then what was the result of that? ये कॉज एंड इफेक्ट भी है. अगर आपको पता हो कि कॉज क्या होता है और इफेक्ट क्या होता है, तो कॉज क्या था? कॉज क्या था? उन्होंने रिवोल्ट किया और उसका इफेक्ट क्या हुआ फिर? द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक परमानेंट कंट्रोल. सो उसके बदले में क्या हो गया? वो ज्यादा सख्त हो गए. गवर्नमेंट ने ही कंट्रोल ले लिया ईस्ट इंडिया कंपनी का. द रिवोल्ट एंडेड इन 1859. Okay, so if you are here and you are participating, then let's see. So I hope you understand this one. Sometime you learn about what is cause and what is effect. So here it's a very good example of cause and effect. कि cause क्या था? इंडियन रिबेलियन ने रिवोल्ट किया और उसका इफेक्ट क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो पहले की प्राइवेट कंपनी थी, उसका कंट्रोल सारा किसने ले लिया? ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, सॉरी. तो वो बल्कि ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया काम. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. Actually, right now I'm on many screens. I have to go this one. Okay, so the Indian rebellion was begun by Indian soldiers called sepoys in the army of the East India Company. So again, I already explained it to you कि Indian rebellion जो है, जो Indian soldiers थे, वो के British army में soldiers थे जो उन्होंने शुरू किया था रिवोल्ट, राइट. सो उनका क्या कहते थे उस टाइम पे? सिपोही भी कहते थे. अब मुझे नहीं पता हिंदी में क्या कहते हैं उनको, बट इंग्लिश का ये वर्ड है. और वो कौन थे लोग? वो इंडियन थे सोल्जर्स, जो कि कहाँ किस में काम करते थे? आर्मी में. किसकी आर्मी थी वो? ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट. नाउ द सिपोइज बिकेम especially alarmed when the British introduced the new infield rifle, which used cartridges greased in a tallow containing and pork fat. So क्या हुआ? जो सिपोही थे, they became especially alarmed. That means उनको तब ज्यादा वो हुआ कि ये क्या हो रहा है. When what happened? What Britishers did? They used the जो उनके इनफील्ड राइफल्स थी, उसमें जो वो कार्ट्रिजेस यूज करते थे, जो गोले बारूद में, उसमें वो क्या क्या था उसमें? दैट वाज कंटेन्ड व्हाट? बीफ और पोर्क. अगर आपको पता हो, बीफ है कि जो गाय का मांस, और पोर्क क्या है? सुअर का मांस, लाइक पिग का मांस.
The cartridges had to be bitten open before being loaded into rifle. So वो cartridges जो थे उनको क्या करना पड़ता था, उनको खोलना पड़ता था अपने, जैसे कह लो कि ऐसे अब क्या कहूँ, बिचन मीन्स दांत से जैसे उसको थोड़ा सा खोलना पड़ता था, तो उनको क्या था कि इनके मुंह में जाएगा ये, राइट। तो अब जैसे ओके, so the cartridges had to be bitten open before being loaded into rifles, but the religious beliefs of the sepoys forbade them to bite open the cartridges. अब जो उसमें कौन थे, हिंदू थे नेचुरली इंडिया में, और वो जो कि गाय बिल्कुल नहीं खाते, एंड मोस्ट ऑफ द हिंदूज, majority of I will say are vegetarian, right? बट उनको वो क्योंकि कार्ट्रिजेस को खोलना पड़ता था, राइट, और वो जो था वो उसमें बीफ इस्तेमाल होती थी। तो and the sepoys who were Muslims, they followers of Islam, could not eat pork. So अब उसमें दूसरा रिलीजन कौन था, जो मुस्लिम्स थे वो पोर्क नहीं खाते थे। तो दोनों के लिए ही क्या था, प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी कि वो उसको कार्ट्रिजेस को मुंह अपने दांतों से नहीं खोल सकते, राइट। तो उनको हुआ कि ये क्या कर रहे हैं, ये इंटेंशनली कर रहे हैं, राइट। तो ब्रिटिशर्स ने इंटेंशनली किया, वो इंटेंशनली मीन्स उनको पता था कि ऐसा है, तो उन्होंने वो यूज किया, क्यों, तंग करने के लिए, राइट। Okay, so the rebellion broke out in the military base at Meerut after British officers imprisoned 85 sepoys for refusing to use the cartridges. So क्या हुआ, rebellion क्यों हुआ, विद्रोह, जिसको rebellion को विद्रोह क्यों हुआ, broke out क्यों हुआ मिलिट्री में, जब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने 85 जो सोल्जर्स थे, जो आर्मी के, सिपाही मीन्स जो आर्मी के थे, ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियंस काम करते थे, जिसमें हिंदूज थे, मुस्लिम्स थे, दे रिफ्यूज टू यूज द कार्ट्रिजेस बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस बिलीफ, राइट, कि वो नहीं उसको कार्ट्रिजेस को खोलेंगे अपने दांतों से, बाइट करके खोलेंगे नहीं। तो उन्होंने उनको क्या किया, इम्प्रिजन मीन्स जेल में बंद कर दिया, राइट। On May 10th, other angry sepoys freed the prisoners and killed many British officers. So, तभी कब की बात हो रही है ये, यहाँ पे 1800s की, राइट। सो उस टाइम पे फिर जो है ये देखो, तो रिबेलियन ब्रोक आउट मीन्स विद्रोह शुरू हो गया। कहाँ में विद्रोह शुरू हो गया, मिलिट्री बेस में। कहाँ वो मिलिट्री बेस था, मैरूत में। और क्यों हुआ वो, क्योंकि उन्होंने 85 सिपोइस को क्या किया, जेल में बंद कर दिया। सो यू हैव टू लुक एट ऑल दीज की पॉइंट्स जो कि रिमेम्बर करने के लिए हैं, कि अपनी मेमोरी में रखो कि जो भी आप कॉम्प्रिहेंशन है उसको आप किस तरह से अंडरस्टैंड करते हो। Why they imprisoned them why they imprisoned them for 84 sepoys? Because what they did, they refused to use what? Cartridges. So they refused. They said, no, we're not going to use it. So on May 10th. So when? On May 10th. So this is the date when they did this. So when did it happen? On May 10th. What happened? Other angry sepoys, और भी जो सिपाही थे वो बहुत गुस्से में थे, वो बहुत नाराज थे कि ये क्या हो रहा है, राइट। सो व्हाट दे डिड, they freed the prisoners and killed many British officers. वो उनको छुड़ा के ले गए वहां से, राइट। वो उनको क्या किया उन्होंने, they freed, इसको let's color code it differently. So they freed the prisoners and killed many British officers. Now rebellion spread rapidly. अब वो जो विद्रोह था वो कैसे हो गया, स्प्रेड होना शुरू हो गया, फैलना शुरू हो गया और जगह पे। बट ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, मैरूत में स्टार्ट हुआ। The sepoys captured several major cities including Delhi, Kanpur and
लखनऊ। सो उन्होंने इन सारे जो एरियाज थे, दिल्ली है, कानपुर है और लखनऊ है, वहाँ पे अपना काफ़ी जो है कंट्रोल बना लिया। Many other Indians joined the sepoys. अब पहले तो शुरू किससे हुआ? आर्मी से। उसके बाद बाकी जो इंडियंस थे उन्होंने भी उनको ज्वाइन करना शुरू कर दिया। अब ये हम जो बात कर रहे हैं ये 1800 में चल रहा है सारा, राइट? They included Indian princes and nobles whose lands had been seized by the East India Company. अब उसमें कौन आ गए, किन्होंने ज्वाइन कर लिया उनको? इंडियन प्रिंसेस, जो राजे थे, राइट, और जो जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टीज थी, या जो लोग इसमें जो कंट्री के लिए सोचते थे कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, सो वो बहुत सारे जो लोग हैं वो सिपोइस के साथ, वो आर्मी के जो सोल्जर्स थे इंडियन थे, जो उनके साथ मिल गए, राइट? So many other Indians joined the sepoys. So उन्होंने उनके साथ मिलके, क्योंकि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, राइट, तो उनकी और लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हो गए। They included Indian princes and nobles whose land had been seized by the East India Company. ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ ले लिया था, जिसकी वजह से उनको था कि नहीं, हमें इनके अगेंस्ट फाइट करना है। So other Indians who supported the sepoys resented British attitude toward the Hindu and Muslim ways of life. They felt threatened by the attempts of British missionaries to convert India to Christianity and by the pace of modernization, right? So उनको क्या खतरा था कि जो ये ब्रिटिशर्स हैं ये कन्वर्ट कर रहे हैं लोगों को, और वो मतलब बहुत सारे जो रीजन से जिनकी वजह से उन्होंने भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। सो लोगों ने, बहुत सारे लोग जो हैं वो मिलके शुरू हो। बाय द समर ऑफ 1858 stronger and better equipped British forces had defeated most of the rebels. So उस टाइम पे कौन था ज्यादा पावरफुल? अगर आप ये सारा पढ़ो तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ही ज्यादा पावरफुल थे, राइट? सो उन्होंने 1858 में they were stronger and they were better equipped British forces, of course, because they had all kind of modern tools that time. उस टाइम वाले टाइम पे उनके पास ज्यादा सब कुछ था, उनके पास पैसा था, बिकॉज वो सारा कुछ तो ले रहे थे इंडिया से। तो दे हैड डिफीटेड मोस्ट ऑफ द रिबल्स। तो जो भी ज्यादा विद्रोही थे मोस्टली उनको उन्होंने क्या किया, डिफीट कर दिया, हरा दिया। The British government then tried to improve relationship with India. It supported big landowners, granted princes their existing territories, and promised never to interfere with the Hindus or Muslim religions. The rebellion greatly intensified anti-British feeling in India. तो उस टाइम पे क्या हुआ फिर? उन्होंने ब्रिटिशर्स को लगा कि ऐसे तो नहीं चलेगा हमारा काम, अगर हम एंटी कर लेंगे इनको, जो प्रिंसेस हैं इनको भी। तो उन्होंने फिर क्या किया, ब्रिटिशर गवर्नमेंट ने, उन्होंने दे ट्राई टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप्स, एंड इट्स वेरी फेमस डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी थी उनकी, राइट? तो दैट्स व्हाट दे डिड दैट टाइम। सो उन्होंने जो कह लो कि वेल ऑफ लोग थे, जो प्रिंसेस थे या लैंड ओनर्स थे, उनके साथ उन्होंने अपने अच्छे रिलेशन शुरू कर दिया, जिससे कि जो आम जो लोग हैं, जो नीचे वाले लेवल में कह लो कि जो आई विल से इकोनॉमिकली, राइट, तो क्योंकि जैसे जो वर्कर्स थे वो सारे उनके अंडर काम करते रहे और उनका काम चलता रहे। तो उन्होंने लैंड ओनर्स को और जो रिच लोग थे, प्रिंसेस थे, जिनके पास खूब सारी ज़मीनें थी, उनके साथ उन्होंने अच्छे रिलेशन अपने बनाए और कंट्रोल किया आम पब्लिक को। ये उस टाइम की बात है, राइट? तो
this was a very interesting reading. I was like, okay, let's share this with my students. So, so I hope if you learned something new in this, I would like to see your comments in the comment section. So let's summarize it without even looking at it. So let's summarize it कि हमने अभी क्या पढ़ा, right? बिना देखे इसको हम summarize करेंगे. अब ये होता है कि summarize में कि हमने क्या पढ़ा और उसमें जो main points थे वो क्या थे. तो क्या था, क्या पढ़ा हमने कि जो कौन थे वो सिपोइस थे. सिपोई कौन थे, जो इंडियन रिबेलियंस थे, जो कि जिन्होंने विद्रोहकारी थे, राइट, जिन्होंने रिवोल्ट किया. किसके अगेंस्ट रिवोल्ट किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट रिवोल्ट किया. व्हाई दे रिवोल्टेड, क्योंकि उनको उनका रूल नहीं पसंद था, राइट, उन पे ऊपर रूल कर रहे थे वो. तो उन्होंने जब रिवोल्ट किया तो क्या हुआ, उस रिवोल्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी. उससे क्या हुआ, they became more powerful, right? When they became more powerful, then what happened, जो रिबेलियन थे उन्होंने भी अपनी पावर इंक्रीज करनी शुरू कर दी. How they started it, they started building the relationship with the princes. और भी जो princes थे, land owners थे, they और wise people थे, they all got together. they और जो rebellion थी वो strong हो गए. But at the same time, the Britishers also, because they had what? They had more technology, they had more tools to fight with, right? So why the rebellions revolted? Because the British government used the cartridges like in the rifles, which they had to open it, they had to bit it with their teeth, and those have what? A beef and pork in it. So जिससे कि you know, because Hindus, as you know, most majority of the Hindus are vegetarian and they don't even eat beef. And at the same time, the Muslims, they don't eat pork. But in those cartridges, there was, they used the pork and the beef fat. So that's why the rebellions were angry. They were like, why you are doing this when you know that we don't eat this or we don't use this kind of a meal, right? So that was the reason. So when they were refusing to use those cartridges, then Britishers put them 85 soldiers, they imprisoned them. So that's the reason the rebellion revolted it. And then what happened? So Britishers, because they had more tools, so they defeated the rebellion. And at the same time, the Britishers got an idea that they need to build good relationship with princes, landowners, right? So that's what they did. So then, so just to do what? To suppress the rebellion, right? That was we were learning. And this happened in 1800, okay? So I hope to see many of you in my Saturday's class, जो कि Saturday को, as you know, 8:30 पे evening पे class होगी. और उस time पे आप अगर अभी नए subscriber हो, you can send me your phone number and I will be sending you the Zoom link on Saturday morning. As you know that every Saturday morning you receive the link, and Saturday evening Indian Standard Time 8:30 हम जो है ये live stream करते हैं. But if you will be receiving my message in Zoom, then I expect you to start joining the class around 8:15, 8:20. So by the time we are ready to be live, right? And we will be having a good discussion. You will be reading with me and we will be discussing the story or any article, something educational where you will be gaining the knowledge and at the same time you will be practicing the skills, right? So again, I will see you then, hopefully in my next class. And at this time, have a wonderful day, right? And stay blessed.